So how this will impact the decision of an Indian student? Education is an inelastic product. ये किन किन लेवल पे कितना कितना कॉस्ट बढ़ा है? It's increased by about 30,000 more. And like I said, ये 25 में अब और बढ़ेगी. Hello, welcome viewers, welcome to season 4 Mythbuster Podcast series at EduMont. With the recent announcement of an increase in US CPA exam fees in 2024, there is a growing concern about its impact on international candidates, especially those in India. But before we dive deep into the amount and causes of the CPA fee increase, I have to ask you, Rohan, a question. In 2023, you had already spoken about the possibilities of the CPA fee increasing and how and why did you predicted the hike in the CPA fee, Rohan? Okay, predicted is a strong word. It's very strong. I don't think I predicted it. I had a good guess. I'll be honest here. I'm not somebody who believes a lot in predictions. मैंने बस अपनी समझ से बताया था कि बस मेरे को जहाँ तक दिख रहा है CPA फीस बढ़ेगी. And there was two very good reasons for it. Number one, look at the state of the American economy. Okay, at the moment, US is facing its highest levels of inflation in a long while. Average rate of inflation under Biden has been 5%, which is very high for the Americans. उनकी इकोनॉमी में इस तरह की इन्फ्लेशन नहीं होती. बुश के टाइम पे 0% थी एवरेज इन्फ्लेशन. सो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रखी बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है. तो CPA क्या अनोखा तो है नहीं, उसके भी बढ़ेंगे. And then the second thing that I knew was that they've had some massive changes in the 23 to 24. They launched a new model, right? The CPA evolution model. This new model has its own development costs. Those also will be recovered, right? Eventually. क्योंकि वो नया कंटेंट आया है, नई तरीके की टेस्टिंग आई है, नई टेस्टिंग पैटर्न्स आए हैं, ये सारी काम ह्यूमन का एफर्ट लगता है, सबकी कॉस्ट है. दैट विल आल्सो बी रिकवर्ड. सो इट्स ओनली नेचुरल दैट आई हैड एंटिसिपेट कि 24 में फीस तो बढ़ेगी विद द किक ऑफ द न्यू मॉडल. एंड आई कैन आल्सो गेस इन 2025 द फी विल अगेन इंक्रीज. Okay, great. So the point here is, Rohan, do you think the increase fee for the US CPA exam, might influence the decision making of the students, especially Indian student? US में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा because ज़्यादा हाइक नहीं है. और अगर है भी तो आप डॉलर में कमा रहे हो, डॉलर में खर्च कर रहे हो. But for Indian student, the conversion, markup fee and all. So how this will impact the decision of an Indian student? फीस बढ़ने से there has to be a small segment of the audience that will suddenly find it a bit too expensive. हालांकि वही दो पहलू हैं. एक पहलू है कि हो सकता है किसी के लिए ये कट ऑफ फिगर बन जाए कि यार वो इसके पार नहीं जा सकता था, तो वो उसके लिए कट ऑफ हो गया, वो नहीं अब अफोर्ड कर सकता. बट एट द सेम टाइम एन आर्गुमेंट कैन बी मेड, द कॉमन सेंस आर्गुमेंट, कि जिसने CPA करनी है उसने किसी भी दाम पे करनी है, उसको कोई भी दाम नहीं रोकेगा. तो वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन इज एन इनइलास्टिक प्रोडक्ट. You can't really deny people education, or people would not actually be affected with such a small price increase to a great extent. तो मेरे को ये लगता है कि प्राइस इंक्रीज इतना बड़ा नहीं है इस बार कि बहुत लोगों को इफेक्ट हो जाए. I think a small portion of people might just get affected. That's the idea. Okay. So what's the exact increase in fee, Rohan? मतलब starting from, अगर हम बात करें evaluation, CPA central cost, then NTS cost, ये किन किन लेवल पे कितना कितना कॉस्ट बढ़ा है? ओके, कुछ जगह बढ़ा है और एक जगह घटा भी है. I'll tell you the exact thing. First things first, for your evaluation the prices are pretty much the same. पहले जो फीस थी वो भी अभी सेम है, कोई फर्क नहीं है खास. सेकंड थिंग इज SBI के साथ रजिस्ट्रेशन की फीस पहले $245 होती थी, वो घट गई है. That's come down to $200. So about $45 reduction there. But at the same time उसके आगे जो नेक्स्ट फीस होती है वो होती है आपको स्टेट बोर्ड के साथ कैंडिडेचर अप्लाई करना होता है. तो कैंडिडेचर अप्लाई करते हुए अब $140 की एक एक्स्ट्रा फी, वन टाइम फी लेवी हो गई है. तो वहाँ 45 कम हो गए, पर यहाँ 140 बढ़ गए. एंड एट द सेम टाइम पर एग्जाम कॉस्ट $90 बढ़ गया. तो हर एग्जाम में $90 की कॉस्ट भी बढ़ गई है. Which again, if you understand from an American person's point of view, is not a lot. Doesn't make a difference. $100 अंग्रेज आदमी को जो वहाँ रहता है, खाता पीता है, वहाँ कमाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता. वो अपने लिए in aggregate, all of this increase, about a $600 increase, which for us at about 85 rupees a dollar is about 30,000 in increase. तो जहाँ CPA की कॉस्ट पहले 3.5 होती थी सब कुछ मिला के, अब वो 3.5 से बढ़ के 384 हो गई है. अभी भी इट्स नॉट, मतलब पूरी 4 लाख नहीं हुई है, अभी भी 16,000 कम है उससे,
but it's still 384, so it's increased by about 30,000 more. And like I said, ये 25 में और बढ़ेगी. Right. And considering कि dollar rate भी बढ़ेगा, conversion charges, markup fee भी लगेगी, so be ready that it will be touching 4 खैर मैंने very ऑलरेडी soon. 85 पे कन्वर्जन किया है, सो Okay, इन ऑल ऑनेस्टी okay. मैं मार्कअप वगैरह सब लेके चल रहा हूँ. ये 85 का एक्चुअल रेट नहीं है अभी, बट थोड़ा ऊपर का लेके चलेंगे तो फायदा रहेगा ना. Why I'm telling this because I've seen many of my friendly competitors, they typically trade at the rate of 80 अपनी website के ऊपर just to keep the fee under 4 or less than 3,50,000. They trade typically between 7, even few are trading at 73. I was shocked to see. But again, उसी को अगर continue करें कैलकुलेट 73 पे करते हैं. हाँ बट दैट्स नॉट करेक्ट ना, वो तो सब जमाने चले गए अब तो. Right. And my last question might pinch them more. How do we ensure that students who are getting at EduMont don't have to pay a single rupee more? अच्छा. So yeah, that's a good question. I'll tell you something. This is actually a segue for me to actually talk about a caveat that I have to tell everybody. Okay. ये जो कॉस्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज द कॉस्ट फॉर वन टाइम. ओके. हर इंस्टीट्यूट जो मार्केट में आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि सीपीए की कॉस्ट इज अ लिटिल लेस देन 4 lakhs, इज टेलिंग यू द कॉस्ट ऑफ वन अटेम्प्ट. इफ यू फेल एन अटेम्प्ट, ईच एग्जाम इज वर्थ मोर देन 60,000. तो 60,000 ना उड़ गए, खत्म हो गए, उनकी कोई कीमत नहीं रहेगी. लाइक आई ऑलवेज से, फॉर यू दैट मनी इज लॉस्ट. तो अगर आप एक भी पेपर एक बार फेल कर गए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में योर कॉस्ट विल गो फ्रॉम 380 प्लस अनदर 60. और अगर कोई 2 पेपर फेल हो गए तो 60 और जोड़ लो, तो आप 5-20 के पार पहुंच गए. तो आम बंदा जो है वो 4 में कर लेगा, पर कोई और बंदा होगा वो 5-20 में करेगा. तो द आइडिया इज, इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू डोंट इंक्रीज योर कॉस्ट, देयर इज एक्चुअली वन वेरी स्ट्रांग वे ऑफ डूइंग इट, मेकिंग श्योर you pass in one attempt. Correct. That's the EduMont promise as well. But more importantly, that has to be your goal as an individual if you want to genuinely stick to this budget. That's the idea. I think this is what we want to establish here कि cost जो है वो आप one time ही लगाओ. And if you want to understand this, that how EduMont make sure that you clear your all 4 CPA exam in one attempt, I would like to personally invite you for an orientation session we do every Saturday 4:30, and it's a live interactive session where you have an opportunity to just simply unmute and talk to Rohan sir and put your question across to him. As always, thank you so much for watching, and like, share, comment, subscribe. We read all our comments. So if there's something that you feel we haven't covered in our podcast and is important to you as a CPA aspirant, feel free to put it in the chat and we will create a podcast on it. Thank you so much for watching. Bye.